right? So as I had mentioned previously, with Apex coding, the basic tool you need to be familiar with where you can originally write code is the developer console. How do you go to developer console? From the admin, if you click on the setup icon, you can directly see the developer console available here. Now, only those with developer permission can actually open the developer console. Someone who does not have developer permission, if he tries to open this, he won't see this option here at all. Okay, so this is only reserved for admins who have permission to access it. Now, once you go into developer console, what are the options you can do? So let's go with the basic ones since we'll be studying, and what we'll be doing is we'll be creating an Apex class. Okay. Now, whenever you create an Apex class, you have to enter name based on what you want. Now, there are two things you should always remember when working with Apex, or I would rather suggest when working with any code. That is, your code should be readable. What does this mean? It means आपका कोड अगर कोई पढ़ रहा है, कोई क्लास का नाम देख रहा है, मेथड का नाम देख रहा है, तो उससे उसको आइडिया आ जाना चाहिए कि पर्पस क्या है, राइट? So let's say in our case, this would just be let's say account demo class, because we are just doing a basic class. In normal use case, आपके पास क्लास लिखने का कोई पर्पस रहेगा कि ये कोड लिखना है या कुछ और फंक्शनैलिटी करनी है, तो सिमिलरली क्लास का नाम आप वैसे देंगे. There should not be any spaces in the name. These are more, I would say, are conventions. जो कोड रिव्यू वगैरह में जाके फिर लोगों को पकड़ जाते हैं कि जैसे your class name should not have spaces inside it, and class name should always begin with capital. And this I would say is a practice followed across all coding languages. कि क्लास वगैरह के लिए हम कैपिटल यूज करते हैं, लेकिन वेरिएबल वगैरह के लिए हम लोग दूसरा केस यूज करते हैं. So let's just create a basic class. Now, when you have created a class, this is your whole container, right? This is your public class, which is your whole container. Now, what does it mean by public? By public it means is कि मैं Salesforce में कहीं और जगह से, by कहीं और जगह I mean flows हो गए, screen से हो गए, LWC से हो गए, वहां से अगर मेरे को चाहिए कि मैं इस क्लास को एक्सेस कर सकूं, तो then this class has to be public, right? If I make this class instead of public, if I make it private, then what is the benefit? There are use cases where private classes are needed. Test class जब बनाते हैं, those are also private classes, right? But on a normal use case, most of the times you will probably be working with a class which is a public class. Okay. Now this public, private, what are these things called? इन चीजों को हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर. एंड एज द नेम सजेस्ट, एक्सेस मॉडिफायर का मतलब यही है कि आप क्लास का कहां से एक्सेस कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके लिए आप इसको ऐड करेंगे. Default, if you don't add public, it becomes there is a default access modifier. अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखते तो it will be default. What does that mean? Default के लिए भी कुछ स्कोप रहता है कि यहाँ यहाँ से एक्सेस हो सकता है, यहाँ से एक्सेस नहीं हो सकता है, but for safety we should be running with public. Now let's assume right now this class has default code, some code is here. Now what I have done here is दो बैकस्लैश डाल के बेसिकली कमेंट्स डाल सकते हैं. What is comments? Comments मतलब ये एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं. दिस इज जस्ट फॉर आवर बेनिफिट. अगर हमको कुछ टैग करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो वी कैन कीप अस कमेंट. Let's assume right now in my class there is at least 50-20 lines of code कि मैं कुछ अकाउंट्स ला रहा हूँ, क्वेरी कर रहा हूँ, एंड अपडेट कर रहा हूँ, समथिंग एंड ऑल आई एम डूइंग. नाउ इन सेल्सफोर्स जो हमने अभी तक सीखा है, ये हमारा ओवरऑल प्रिंसिपल वी ऑलवेज फॉलो इज you should not have access to things that you are not meant to access, right? So in code what I can do, how I can do that, let's assume मैंने यहाँ पे इस कोड के अंदर एक क्वेरी लिखा था which was query all accounts. I'll write the query later. This is just text, query all accounts
and update the account site on all. Okay. अब आप ये सोचिए, right now the class will be running in something called the system context. What does that mean? इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे ऐसा मैं क्वेरी रखता हूँ, मेरे ऑर्ग में अगर 1 लाख अकाउंट्स हैं, तो हर अकाउंट रन होगा एंड हर अकाउंट का अकाउंट सेट अपडेट हो जाएगा। अगर ये कोड सपोज यूआई से किसी ने एग्जीक्यूट किया है, बटन पे क्लिक किया, ये कोड चला, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ किसने किया है, सारे अकाउंट्स अपडेट हो जाएंगे। राइट नाउ दिस इज दिस अ गुड सिनेरियो और अ बैड सिनेरियो? एनीवन? शुड दिस बी अलाउड और नॉट अलाउड? कि कोई सारे अकाउंट अपडेट कर सकता है? यस। हेलो सर। नहीं, यस। एक्चुअली सारे अकाउंट अपडेट होंगे तो इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ये कोड रन करता है किसी पार्टिकुलर अकाउंट के लिए अगर अपडेट करते हैं तो वो सही है, लेकिन सडनली जो पास्ट जिसको अपडेट ही नहीं करना है और वो भी नहीं अपडेट नहीं, हो जाए। राइट। सो सी, इट्स नॉट अबाउट एनी पार्टिकुलर अकाउंट। सपोज कोई एक सेल्स मैनेजर है, राइट, उसके यस, उसको अपने सारे अकाउंट्स अपडेट हो जाने चाहिए, दैट इज अ वैलिड सिनेरियो। बट किसी यस, और दैट्स सेल्स मैनेजर के दैट्स अकाउंट वैलिड। अपडेट होने चाहिए, केस होने? नहीं, किसी और मैनेजर के अकाउंट, ये सेल्स मैनेजर के अकाउंट अपडेट नहीं होने चाहिए। अगर नहीं वो होने अपना चाहिए, कर राइट। रहा है तो अप यस, उसका खुद का सिर्फ होना चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली। सो इन दिस केस, अब यूआई लेवल पे व्हाट वी हैव लर्नड, हाउ दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड। दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड यूजिंग रिकॉर्ड एक्सेस एंड शेयरिंग रूल्स, राइट। किसको कौन से रिकॉर्ड का एक्सेस है? अब कोड के अंदर हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? इट इज वेरी इजी। हियर, यहाँ पे हमने जैसे पब्लिक लिखा था, क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो ऊपर आएगी। अगर हमने यहाँ लिख दिया पब्लिक विथ शेयरिंग, इसका मतलब होगा इस क्लास का जो भी कोड है वो चलेगा कीपिंग इन माइंड सिस्टम में कौन कौन से शेयरिंग रूल्स एक्टिव हैं, चालू हैं, कौन कौन से शेयरिंग रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सेस है। सो व्हाट विल हैपन नाउ, 1 लाख अकाउंट्स में से उस सेल्स मैनेजर को 2000 अकाउंट्स का एक्सेस था, तो यहाँ पे खाली वही 2000 अकाउंट अपडेट होंगे, बिकॉज शेयरिंग रूल्स के चलते उस सेल्स मैनेजर को खाली उन 2000 अकाउंट्स का ही एक्सेस है। ही कैन नॉट सी दोज अकाउंट्स। नाउ विथ शेयरिंग हमने कर दिया। सपोज आई वांट कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक बटन बनाना है एंड वो जब भी कोई एक्शन करेगा वो सबके लिए होना चाहिए, राइट। वो मैं चाहता हूं कि सबके लिए हो, डेलिबरेटली वी वांट, वी नीड कि सबके लिए हो। तो इन दैट केस द अदर ऑप्शन इज विदाउट शेयरिंग। सो दिस इज कॉल्ड द क्लास एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, कि शेयरिंग रूल्स आप कोड में एनफोर्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। In most cases, standard practice is, unless you know that you have to run without sharing, always go with sharing. Okay, अगर आपको कोई स्पेसिफिकली बोल रहा है या रिक्वायरमेंट देख के आपको लग रहा है नहीं ये सबके लिए ही होना चाहिए, then only you will go with without sharing, else go with sharing. अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो that will run with sharing. Okay, now inside the class we have come. Now class के अंदर there are two basic things you can do. Okay, one is आप वेरिएबल बना सकते हैं। आप वेरिएबल बना सकते हो किसी भी डेटा टाइप का जो हमारे सेल्सफोर्स में एक्सेसिबल है। व्हाट वी हैव इज स्ट्रिंग, वी हैव द नंबर्स के अंदर सब कैटेगरीज है, जैसे इंटीजर हो गया फॉर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हो गए, और उसके बाद नेगेटिव नंबर्स के लिए हो गया। अगर आपके पास डेसिमल वाले नंबर्स हैं सो यू विल हैव डबल,
right? Then if you have lots of characters, it's a decimal, maybe it's a very big number, then there is something called long, right? तो ऐसे करके हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं प्रिमिटिव. So I'll just show you the basic data types which are mostly used. String हो गया हमारा. String के अंदर नहीं है. String में हम ऐसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. Numbers के अंदर what we have? Integer. This is one. Simple. If I want double, for if the value is something like this, then we will be having double. Okay. So other than like the primitive data type, in Salesforce, we also have something called the collections. Now, what are collections? Collection data type क्या होंगे? Suppose in this case I have one account set value. Integer के लिए भी मैंने एक integer value लिया है. Let's say I want the salary of 10 employees. Right. So in that case, creating 10 integer variables is something we can do. Right. वो हम कर सकते हैं. बट उससे क्या होगा, उससे कोड बहुत रीडेबिलिटी कम हो जाएगा, कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अननेसेसरी. हर जगह अलग अलग वेरिएबल होंगे, राइट, हार्ड कोडेड करके रहेंगे. अगर आपको किसी चीज पे ऑपरेशन करना है, सेम ऑपरेशन, तो 10 वेरिएबल पे अलग अलग से बनाना पड़ेगा. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज कलेक्शन. एंड बाय कलेक्शंस, एज द नेम सजेस्ट, it is nothing but a group of variable. Now in collections there are three main types. Okay, first type is list. Now list is your simple value, जो मैंने आपको बोला कि suppose 10 एम्प्लॉय का सैलरी है, राइट. सो हाउ डू यू क्रिएट अ लिस्ट इन सेल्सफोर्स? लिस्ट बनाने का सिंटैक्स इज लिस्ट, देन एंगुलर ब्रैकेट्स, एंड जो भी आपका डेटा टाइप है. तो फॉर सैलरी व्हाट शुड बी द डेटा टाइप हमको लेना चाहिए? एनीवन? Integer, sir. double currency currency नो, सर करेंसी फील्ड करेंसी का टाइप है. इंटीजर करेंसी लेना है तो सर। फील्ड का टाइप. अच्छा अब नाउ number इन दिस केस, व्हाट यू शुड थिंक is नॉर्मली सैलरी इंटीजर आप सोच सकते हैं, बट कभी यस कभार ये राइट. सब जब कंप्यूटेशन होता है, डेसिमल में भी वैल्यूज आ जाती है बेस्ड ऑन कैलकुलेशन टैक्स, राइट. तो राइट. you should go with double. And why you will go with double? The another reason is जो करेंसी जो फील्ड है ना, वो भी बैकएंड में स्टोर्ड एज अ डबल. आप पॉइंट में वैल्यू डाल सकते हैं यस सर। करेंसी फील्ड के अंदर, इफ यू ट्राई, राइट. सो इट इज बेटर इफ वी यूज डबल, क्योंकि डबल से इंटीजर आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो. लेकिन एक बार आपने इंटीजर में डाला, आप पैसे का वैल्यू कहाँ पे डालोगे, राइट. यस सर, वैल्यू छूट जाएगी ना, वो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू रहेगी। तो लेट्स इसलिए क्रिएट सैलरी लिस्ट। लिस्ट ऑफ डबल. एंड वेरिएबल नेम, अगेन देयर आर टू कन्वेंशंस रेस्पेक्टिव, जो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, अप टू यू. बट नॉर्मली व्हाट आई डू इज, जब भी मैं कोई लिस्ट बनाता हूँ, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लिस्ट, एंड एट द एंड आई विल ऐड द वर्ड लिस्ट. व्हाई? अगर ये क्लास सपोज 600 लाइन की है, 600 लाइन बाद कहीं जाके एक वेरिएबल है सैलरी लिस्ट, तो स्टिल द पर्सन कैन अंडरस्टैंड, ओके दिस इज अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, राइट. ये अगर मैं जस्ट वेरिएबल का नाम लिख दिया होता उससे, जैसे हम बेसिक कोड में लिखते थे ए, राइट, देन 500 600 डाउन लाइन कहीं पे मेथड में जाके देख रहा है कि इज ए एम्प्टी, ए एम खाली है कि नहीं. अब द पर्सन विल बी वरीड कि ए है क्या, कहाँ पे ढूंढूं मैं. देन ही विल हैव टू गो थ्रू द होल कोड, राइट. विच इज वाई ऑलवेज मेक श्योर आप वेरिएबल का नाम ऐसा दे रहे हो कि उसका पर्पस समझ. एंड फॉर द केस सेंसिटिव, दिस इज हाउ यू शुड बी राइटिंग. अगर एक ही वर्ड है, लेट्स से अगर खाली एक वर्ड होता सैलरी, then it would have been just small case salary. If it is multiple words, then first word will become this small, second word will be big. Let's take this one, employee salary list.
Okay. So this is called camel case, right? No, not camel case. Camel case will be this. Okay. Okay. Conditions. Right. If E was also capital, then it's camel case. Right. So anyway, list salary तो हमने बना ली. Now you will have to remember, वेरिएबल अगर इंडिविजुअल वेरिएबल है आप डायरेक्टली वैल्यू ऐसे असाइन कर सकते हैं. लिस्ट के लिए यू एक्चुअली कैन नॉट डू दैट. व्हाट यू हैव टू डू इज, इस साइड पे भी आपको न्यू लिस्ट डबल ऐसे लिखना पड़ेगा. व्हाट डज दिस इंप्लाई नाउ? सी, अगर वेरिएबल का डायरेक्ट वैल्यू है तो उसने क्या, हमने बोला आप इस 1 को लीजिए और इस इंट वैल्यू में डाल दीजिए, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू है विच इज 1. तो हमने क्या किया, वैल्यू को सीधा वेरिएबल में डाल दिया. बट इन लिस्ट सिंस इट इज अ कलेक्शन, तो आपको वेरिएबल में पहले आपको वो कंटेनर असाइन करना पड़ेगा. एंड कंटेनर आप कैसे असाइन करोगे? यू विल टेल सेल्सफोर्स टू क्रिएट अ न्यू collection variable of the type list double, and that will get assigned to this variable list, salary list. सारे collections के लिए the structure is same, right? Now अब हमने list तो बनाया. List के अंदर there are few basic operations you should know. The one which I'll cover now is basically just add. अब मेरे को अगर 10 लोगों का सैलरी ऐड करना है, तो हाउ आई विल डू दैट? सैलरी लिस्ट हमने बनाया, बट राइट नाउ इट इज ब्लैंक. इट इज जस्ट अ ब्लैंक कोड. ओके, ऐड करेंगे ना सर 1 बाय 1 करके. सो व्हाट वी विल डू इज, लिस्ट का ही एक मेथड है डॉट ऐड, एंड इसके अंदर हम अब जाके वैल्यू डालेंगे. लेट्स से फॉर सैलरी आई ऐड दिस, राइट? एंड व्हाट आई विल डू इज, just for sake of speed, I'll add oh, sorry. राइट, तो मैंने 5 सैलरी यहाँ पे ऐड कर दी. दिस इज हाउ यू बेसिकली ऐड थिंग्स टू द लिस्ट. लिस्ट के अंदर देर आर लॉट ऑफ अदर मेथड्स आल्सो. ऐड ऑल करके है, आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं. राइट, कंटेन्स है जो आपको चेक करके बताता है कि क्या क्या है. सो दोज मेथड्स विल कवर इन डिटेल लेटर ऑन, बट राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाउ टू वर्क विद लिस्ट. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आई एम गेटिंग हियर? Okay. Did you miss something? What is happening? Why are there problems here? Screen responses. Oh, right. Sorry. I'll have to comment this. Why I have to comment this is, see right now, okay, I'll just use this only. What you can see here is, I am receiving multiple errors here. Okay. Why I was receiving multiple errors here? This is just creation of a variable. Okay, क्लास के अंदर हम वेरिएबल बना ही सकते हैं, हमने बना दिया, दैट इज फाइन. लेकिन दिस पार्ट इज एक्चुअली कोड, कुछ हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, एंड यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट कोड इनसाइड द क्लास. Okay, so what you need for writing code inside the class is, you want something called the method. मेथड के ही अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम रहते हैं. जैसे जावा में हम फंक्शंस बोलते हैं, राइट? देन अलग अलग उसमें आप इसी तरह डिफाइन करते हो, बट द पर्पस इज सेम. ब्लॉक्स जिसके अंदर आप कोड लिख सकते
Okay. Now for method also there is a syntax. First thing, जैसे क्लास का विजिबिलिटी है, सिमिलरली आपका मेथड का विजिबिलिटी भी होता है. लेट्स हैव पब्लिक मेथड अगर मैं बनाता हूँ, व्हाट डज दैट मीन? इट विल मीन इस मेथड को मैं इस क्लास के बाहर से भी कॉल कर सकता हूँ. लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कोई मेथड है जो इसी क्लास के अंदर रहे, then I'll make it as private. Okay. So the first thing you have to put is I'll add it as a comment here. Method के syntax का first thing is your access modifier जो भी रहेगा, right? Access modifier के बाद the next mandatory thing, this is mandatory, you have to write is function का method का return type क्या है? What does that mean? हर एक मेथड के अंदर से आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो. समटाइम्स कोई मेथड रहेगा, लेट्स से टू फेच डेटा, आप डाटा फेच कर रहे हैं.